आज हम लोग कर रहे हैं सेक्शन 164 डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। सीता हमारे साथ है, सीता चालू करो। A person shall not be eligible for appointment as a director of a company if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court. ठीक है, एग्जांपल ले लो। कंपनी का नाम है राइट मूव एकेडमी। Right Move Academy Limited. और अपॉइंट करना है रूपाली वैद्या को। Once. So, what are the qualifications which Rupali Vaidya should fulfill before acting as a director? Which Yeah, what are the disqualifications she should not have? Okay, disqualifications which she should not have for appointment as director. So first है unsound. She should not be of unsound mind and declared by so declared competent court. तो पहली कंडीशन ही दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। She should not be of unsound mind. Should not be of and declared as such by the court. By the court. ठीक है। ये पहली कंडीशन। He's an undischarged insolvent. She should not be. She should not be an undischarged. क्या होता है undischarged insolvent? मतलब already declared by a court for being bankrupt, ना? Should not be. इंसॉल्वेंट होने के बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया, मतलब भैया अभी आपकी कोई भी फर्दर लायबिलिटी नहीं। ओके, अगर ऐसा नहीं हुआ सर आपकी आवाज कट रही है। हेलो, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ लेकिन डिस्चार्ज नहीं हुआ। हाँ हेलो, अभी आ रही क्या? हेलो, यस अभी आ रही है। Should not be undischarged insolvent. Point number 3. Hello. 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 Sir, can you hear me? आवाज I can hear you. Hello. हाँ अभी मेरे को आ रहा है। ठीक है, अभी आ रही है। हाँ, पहली कंडीशन कि अनसाउंड माइंड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए कोर्ट के द्वारा। दूसरा, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। थर्ड, he has applied to be adjudicated as an insolvent and his application is pending. उसने अप्लाई किया हो और उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग हो तो ऐसा आदमी भी डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। Yes, applied for insolvency and application is pending. तो अभी हर चीज आप पॉजिटिव सेंस में कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि एप्लीकेशन अगर कंप्लीट होगी तो ऊपर हेडिंग ठीक करो। तो या तो पॉजिटिव में लिखो या नेगेटिव में लिखो। ऊपर जो आप लिख रही हो डिस्क्वालिफिकेशन वी शुड नॉट हैव फॉर अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर, तो शी शुड नॉट बी डिलीट करो। अच्छा। हेलो सर, आपकी आवाज कट रही है। हेलो, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। फिर अप्लाइड फॉर इंसॉल्वेंसी एंड एप्लीकेशन इज पेंडिंग। नेक्स्ट,
he has been convicted by a court of any offense, whether involving moral turpitude or otherwise, and sentenced in respect thereof to imprisonment for not less than 6 months, and a period of 5 years has not elapsed from the date of expiry of the sentence. Provided Provided that that if a person has been convicted of any offense and sentenced in respect thereof to imprisonment for a period of 7 years or more, he shall not be eligible to be appointed as director in any company. ठीक है Hmm. अभी कैसा हो गया convict of an so लिखो convicted of an offense Convicted of an offense and sentenced to imprisonment नीचे एंटर करो 6 month more than 6 months more than 6 months. इन्हें करो more than 7 years Okay, more than 7 years. तो पहले केस में लिखो after expiry of 5 years After expiry of 5 years, he can be appointed. She can be appointed as can more than 7 year की imprisonment हुई है तो cannot be appointed as director cannot be appointed as director. इसमें कोई टाइम गैप नहीं अगर किसी को 7 साल से ज्यादा सजा तो आदमी किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता ये 7 साल कंटिन्यूस है ना मतलब नॉट इंटरमिटेंट ना ठीक है फिर an order disqualifying him for appointment as a director has been passed by a court or tribunal and order is in force. ठीक है कोई ऑर्डर पास बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल डिस्क्वालीफाई हिम Order passed. Court or tribunal disqualifying disqualifying her to be appointed as director appointed as director. ये वो कंडीशन है जो अपॉइंटमेंट से पहले ही चेक करनी है Okay, or should not to be checked before appointing anyone on board. Okay. Then 6th point next. He has not paid any calls in respect of any shares of the company held by him, whether alone or jointly with others, and 6 months have elapsed from the last day fixed for the payment of the call. not paid call for more than 6 months Not paid call on for more than shares 6 months more than 6 months. Hello. Hello. ठीक है हाँ आ रही है बात आगे बोलो हाँ okay. He has been convicted of the offense dealing with related party transaction under section 188 at any time during last preceding 5 years. ठीक है convicted of offense Convicted of offense under section 188 under section 188 in last 5 years last 5 years. In last 5 years. रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बिना प्रोसीजर फॉलो किए नहीं कर सकते ठीक है फिर he has not complied with subsection 3 of section 152. क्या है सेक्शन 3 152 का 152 one he has been allotted the din number as may prescribed. No person shall be appointed. Yes. Not having din. As per section 152(3). फिर
he has not complied with provisions of subsection 1 of section 165. I have 165 का one. 165. Number of directors. No person after commencement of this act shall hold office as director, including any alternate directorship, more than 20 companies at the same time, provided that maximum number of public companies in which a person can be appointed as director shall not exceed 10. ठीक है, For तो इसका reckoning, मतलब क्या हो गया? इसका मतलब होगा कि वो जितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप होल्ड करता है उससे ज्यादा होल्ड जितने लॉ में अलाउड है. लॉ में अलाउड है मैक्सिमम 20 कंपनी है, जिसमें से मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी हो सकती है. yes. सब्सिडरी जो रहती है उसको पब्लिक मानते हैं. Okay. Directorship in a dormant company should not be taken. Holding directorships more than the prescribed limit. तो ये आदमी भी अपॉइंट नहीं हो सकता डायरेक्ट. then prescribed limits as per section 165. ठीक है. फिर subsection 2. No person who is or has been a director of a company which has not filed वन को पूरा समराइज कर दो कि क्या था, कि क्या क्या कंडीशन. One speaks about conditions to be checked before appointing any director on the board of the company. 164.1. उसके अंदर there are 9 conditions which have to be fulfilled, such as person should not be of unsound mind and declared by the court as such. He should not be declared insolvent. He should not have applied for insolvency and application is pending. He should not be convicted of an offense and sentenced to imprisonment. Under this clause, if he is convicted and sentenced for more than 6 months, after expiry of 5 years, that person can be appointed as a director. But if he is convicted for more than 7 years imprisonment, he cannot be appointed as director in any company. The next criteria, if there is any order passed by court or tribunal disqualifying him, he has not paid calls on shares for more than 6 months. Under section 188 for related party transactions, he is contravened the provisions of the section. He is not having DIN as per section 152(3), and he is holding directorship more than the limits under 165(1). हेलो. कनेक्टेड है. कंट्रावेंट करने के बाद अच्छा, कन्विक्टेड. ठीक है. 165 subsection 2. सर आपकी आवाज बहुत कट रही है बीच में. बोलो आगे. 164 सेक्शन चला. हाँ सॉरी 164. हाँ आप ऊपर 165 लिखी हुई है. ऊपर 164 subsection 2. No person हो गया उसको कट करो, ऊपर लेके जाओ. Subsection 1. चलो 164(2). हाँ 164(2). No person who is or has been a director of a company which has not filed financial statements or annual returns for continuous period of 3 financial years, or has failed to repay deposits accepted by it or pay interest thereon, or redeem any debentures on due date, or pay interest thereon, or pay any dividend declared, and such failure to pay or redeem continues for 1 year or more, shall be eligible to be reappointed as director of that company or appointed in any other company for a period of 5 years from the date on which the said company fails to do so. Provided that where person is appointed as a director of a company which is in default of clause A
and or clause B, he shall not incur disqualification for a period of 6 months from the date of his appointment. ठीक है. अभी सपोज रूपाली वैद्य कंपनी में डायरेक्टर है, XYZ लिमिटेड. लिमिटेड, ठीक है. अभी हम लोग फाइनेंशियल ईयर 22-23 में चल रहे हैं. इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर एक नीचे एंटर कर दो, फाइनेंशियल ईयर 21-22, 20-21 और 19-20, 3 साल की बैलेंस शीट फाइल नहीं करी. 22-23 फाइनेंशियल ईयर 2020. फाइनेंशियल ईयर करंट जो चल रहा है, करंट ईयर है 22-23, तो 3 प्रीसीडिंग ईयर चल रहे हैं. अच्छा, प्रीसीडिंग 3 इयर्स उसके पहले 21-22, 21-22, 2020-21 and 19-20. ओके. ठीक है. ये 3 साल में क्या लिखा है सेक्शन में, देखो क्या कर रहा है सेक्शन, क्या बोल रहा है. सेक्शन ये बोल रहा है कि हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स फॉर एनी कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर्स. ठीक है. तो कंपनी ने तीनों सालों की बैलेंस शीट एंड एनुअल रिटर्न, आगे डैश मार के लिखो नोट फाइल. बैलेंस शीट एंड एनुअल रिटर्न नोट फाइल. रिटर्न नॉट फाइल्ड. और एंटर मार के और लिखो. और अब नीचे दूसरा देखो क्या कह रहा है. has failed to repay deposits accepted by it or pay interest thereon, or redeem debentures on due date or pay interest due thereon, or pay any dividend declared, and such failure to pay or redeem continues for 1 year or more. ठीक है. अब ऊपर जाओ, एग्जांपल में लिखो, 3 कॉलम बनाओ, 3 नीचे, और फर्स्ट में लिखो डिपॉजिट, सेकंड में लिखो डिबेंचर. एक मिनट, 3 कॉलम ना, कॉलम नहीं, वो अच्छा 1 2 3 एक दूसरे के नीचे. अच्छा डिपॉजिट, सेकंड डिबेंचर, थर्ड डिविडेंड. डिपॉजिट के लिए क्या कह रहा है वो, क्या नहीं किया होना चाहिए. डिपॉजिट के लिए फेल टू रीपे डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय इट और पे इंटरेस्ट देयरऑन. ठीक है. तो लिखो ऊपर डिपॉजिट नोट पेड, नोट रीपेड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट देयरऑन. Interest thereon. Then debentures. Debentures, redeem any debentures on due date or pay interest due thereon. लिखो redeem debenture और including interest thereon. Redeem debentures. Not redeem debenture. Not redeem debentures. Redeem debentures including interest thereon. डिविडेंड के लिए क्या बोल रहा है. Dividend or pay any dividend declared. ठीक है. Not paid dividend declared. Not paid dividend declared for a period, and such failure to pay or redeem continues for 1 year or more. एक मिनट सर. Such above failures continue for 1 year or more. अब हर एक के आगे एक डेट लिखो. डिपॉजिट नहीं, इसके आगे लिखो एग्जांपल से. अच्छा, डिपॉजिट के आगे डेट लिखो 31 मार्च 31. ठीक है. हेलो सर, आपकी आवाज बहुत मार्च 31, 2000. हाँ तो स्पीकर पे बोल रहा हूँ, कम ही है. डिविडेंड पे करना था सितंबर 30-22 को. सितंबर 30, 2022. अब इसने फर्स्ट केस में मार्च 25-22 का डिपॉजिट 1 अप्रैल 2023
भी नहीं पे किया। फर्स्ट अप्रैल, फर्स्ट not paid ना, on April 01, 2022. सेम नीचे कॉपी कर ले। ये भी यहाँ पे अक्टूबर 1 कर ले। इसको अक्टूबर। अगर उस दिन ये अप्रैल 1 को और अक्टूबर 1 को ये स्टेटस है, अक्टूबर 1 23। 2023 बीच में भी दोनों में भी 23। अच्छा 23। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया 1 साल से ज्यादा। हाँ 1 साल से ज्यादा हो गया। हाँ तो अब जो डायरेक्टर इस कंपनी में है उसको क्या है, अब वो इसमें रीअपॉइंट नहीं हो सकता, नीचे लिखो क्या क्या नहीं हो सकता उसके साथ। अच्छा इसके हिसाब से shall be eligible for reappointment or in that company. हाँ तो 2 पोजीशन लिखो ना। तो देन अगर ये दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल हुई, देन any of the above 3 conditions fulfilled. 3 का 2 है ना, डिविडेंड ना। नहीं ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किए या ये सब किया। अच्छा और दिस ओके, if any of the above 2 conditions not fulfilled. इसको A and B कर देती हूँ, preceding 3 financial years के लिए एनुअल रिटर्न और बैलेंस शीट फाइल नहीं की, और बी में डिपॉजिट डिबेंचर डिविडेंड के क्लॉज। any of the 2 above conditions, that is A and B, अट्रैक्टिव नॉट फुलफिल्ड क्या, A and B affected. अट्रैक्टेड If any of the above 2 conditions A and B, attracted applicable, yes, attracted. then first cannot be reappointed in that company, reappointed in XYZ Limited. And XYZ Limited. Okay. Second, cannot be appointed in Right Move Limited for 5 years. Right Move Academy. Enter for 5 years in both the cases. In both the cases, no? ऐसे है ना, नीचे पढ़ के देखो, यही भी नहीं आ रहा ना। यहाँ पे shall be eligible to be reappointed as director of that company or appointed in other company for a period of 5 years from the date on which the said company fails to do so. तो 5 ईयर कहाँ से काउंट होंगे, डिफॉल्ट की डेट से। 5 years from the date of default. जो कंडीशन मैट हुई, 1 साल वाली या 3 साल वाली। आगे प्रोवाइडेड दैट क्या है, provided that where a person is appointed as a director of a company which is in default of clause A or clause B, he shall not incur disqualification for a period of 6 months from the date of his appointment. हेलो, अगर हम लोगों ने XYZ में किसी को अपॉइंट कराया अभी न्यू डायरेक्टर, 6 महीने तक वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, इवन दो XYZ ने 3 साल के ये रिटर्न नहीं फाइल किए हैं और ये सब नहीं किया। अच्छा, तो दिस इज ये नए डायरेक्टर के लिए है कोई। If XYZ Limited appoints a new director, then he/she shall not be disqualified for a period of 6 months. उसके पास ऑप्शन है कि 6 महीने में वो फाइल करवा के फ्री हो जाए।
6 months option to file balance after sheet. within 6 months. अच्छा, within 6 months. अगर वो फाइल करवा देता है तो डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा, नहीं तो वो डिस्क्वालीफाइड। और पे द इंटरेस्ट ना, नहीं जो भी ये कंडीशन है हाँ, और पे डिपॉजिट डिबेंचर डिविडेंड आफ्टर 6 months. आफ्टर नहीं ना, विदिन। हाँ, within 6 months option to file or pay deposit debenture dividend and get free from any disqualification. Right. ठीक है, ये क्लियर है। अब एक बार स्पीड में इसको सम अप कर दो 2 को। 164 कह रहा है कि if in any company which has not filed its financial balance sheet and annual return in past 3 years or has not repaid deposit with interest for a period of 1 year or more, has not redeemed debentures with interest for a period of more than 1 year, has not paid dividend after declaring dividend, then that person cannot be reappointed in that company and cannot be appointed in any other company for a period of 5 years from the date of default. Now, then the provision says that if a new director is appointed, then this new director will not be disqualified for a period of 6 months. Within 6 months, he has the option to file the balance sheet annual returns or repay the deposits, debentures or dividends and get free from disqualification. After 6 months, he will get disqualified. That means वो भी फिर किसी और कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकता और वो नहीं हो सकता। Yes. ठीक है, कट कर लो फिर। कहाँ गया, नीचे ही गया लगता है। ठीक है, चल आगे बढ़ो। A private company may, by its articles, provide for any disqualification for appointment as a director, in addition to those specified in subsection 1 and 2, provided that disqualification referred to in clauses D, E, and G of subsection 1 shall continue to apply, even if petition, appeal, or appeal has been filed against the order of conviction or disqualification. ठीक है, पहले 3 ले लो। 164(3). Right move private limited. Right move private limited can specify further grounds of disqualification. Can provide further grounds for disqualification in articles. ठीक है, उसके बाद जो ऊपर आपने डिस्क्वालिफिकेशंस लिखी थी ना, उसमें से जो 3 डिस्क्वालिफिकेशन है, जो कन्विक्शन वाली है, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन शैल कंटिन्यू, उसी के नीचे लिखो जो 1 के नीचे। अच्छा, 1 के नीचे डिस्क्वालिफिकेशन फॉर conviction shall continue despite appeal preferred. Unless वो appeal आपकी फेवर में नहीं आ जाती। Despite appeal, हाँ, preferred. yes, preferred. ठीक है, तो अपील अगर चलती जाएगी पर एक बार ऑर्डर पास हो गया तो स्टिल ही विल स्टैंड डिस्क्वालिफाइड। और जब वो अपील आपकी फेवर में होगी तब आप हटोगे, तब तक नहीं। ओके, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको जेल का ऑर्डर हो गया 7 साल का, कन्विक्ट हो गया
आपने अपील करी और आप बोलो कि नहीं मैं तो जब तक अपील का नहीं होगा तब तक मैं डायरेक्टर बन सकता हूँ, अच्छा, डिस्क्वालिफाइड ही रहेगा वो डायरेक्टर। ठीक है। अभी पूरा सेक्शन हो गया, इसका कोई रूल में नहीं है ना कुछ भी? नहीं, इसका कोई रूल नहीं है। ठीक है, अब फटाफट ये पूरा सम अप कर दो, 1 से लेके 3 तक। सो वन में बेसिकली चेकलिस्ट थी कि बिफोर अपॉइंटिंग एनीवन ऑन बोर्ड क्या क्या क्राइटेरिया चेक करने चाहिए। जैसे कि अनसाउंड माइंड, डिस्क्वालिफिकेशन, इफ ही इज इंसॉल्वेंट और एज अप्लाइड फॉर इंसॉल्वेंसी, कोई भी ऑर्डर पास हुआ हो, कन्विक्शन हुआ हो, और अपील प्रेफर करे तो भी डिस्क्वालिफिकेशन कंटिन्यू रहेगा। फिर 2 में कहा था, 2 कंडीशंस दी थी कि अगर 3 साल तक बैलेंस, नो के नो अच्छा पढ़ना ऐसे। ठीक है, तो 164(1) में पहली तो ये थी कि अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए एंड शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड आल्सो बाय द कोर्ट। फिर इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, या एप्लीकेशन करी हो इंसॉल्वेंसी के लिए और वो एप्लीकेशन पेंडिंग है। कोई भी कन्विक्शन नहीं होना चाहिए एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट। उसके अंदर 2 चीजें थी, इफ सेंटेंस फॉर मोर देन 6 months, then after expiry of 5 years he can be appointed as director. But if conviction is more than 7 years, cannot be appointed at all. Then any order passed by a court or tribunal, फिर not paid calls on any shares for more than 6 months. सेक्शन 188 के अंदर कन्विक्शन हुआ है, दिन नहीं है, डायरेक्टरशिप इन मोर देन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स एज पर 165(1), और ये कोई सब भी लोग नहीं ऑर्डर, अपॉइंट हो सकते। यस, से नहीं अपॉइंट हो सकते हैं। फिर एनी कन्विक्शन, एक बार ऑर्डर पास हो गया है, आप डिस्क्वालिफाइड हो, फिर डिस्पाइट एनी अपील व्हिच इज पेंडिंग इन एनी कोर्ट। फिर 2 के अंदर ये कहा गया कि अगर आपने पहले 3 साल में एनुअल रिटर्न बैलेंस शीट नहीं फाइल करी है और कंटिन्यूअस ईयर प्रेसिडेंट 3 कंटिन्यूअस ईयर्स, ओके, और आपने डिपॉजिट नहीं रीपे करी है विद इंटरेस्ट, डिबेंचर्स नहीं रिडीम किए विद इंटरेस्ट, या डिविडेंड डिक्लेयर किया पर पे नहीं किया फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 year, then you cannot be reappointed as director in the same company or appointed in any other company for 5 years from date of that default in both cases, that is A and B above. फिर if a new director is appointed, he will not be disqualified for 6 months. मतलब एक 6 months का window रहता है within which he is to file the balance sheet annual return or satisfy the conditions of paying deposit, debenture, dividend and get free from the disqualification. फिर 3 में कहता है कि राइट, एक कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, it has the option to provide further grounds for disqualification in its articles of association. ठीक है, तो 164 क्लियर है? Yes, 164 बहुत क्लियर है। चलो क्लोज करूं? Yes.